What's your balayage desire? Soft and luminous. Sexy. Not stripy. Extreme without warmth. French balayage by L'Oréal Professionnel Paris. Always natural looking, whatever your balayage desire. The secret? A professional two-step technique. 1. Perfectly blended lightning. 2. Nourishing gloss to neutralize warmth. French balayage. Book your rendezvous now at your L'Oréal Professionnel salon. L'Oréal Professional. Hello and welcome. I hope you are having a beautiful day. When I showed up last time for our very first boot camp in Feb 2021, I was excited to connect with you with the latest in fashion color trend from L'Oréal Professionnel. Today, 5 months down the line, I am super excited to connect with you once again with the very latest in fashion color movement from L'Oréal Professionnel, the French balayage. Thank you for joining us today and thank you for taking time out of your busy schedule. I said this before and I said this again, I am super thrilled and honored to share time with the people that I love and admire the most. That is you. If you like what you are watching today, do remember to hit the like button by the end of the session. This is Pradeep Dhananjayan, Senior Manager Education, L'Oréal Professionnel. Today, me and my team are here to bring to you some super exciting and informative session on French balayage. Feel free to connect with us. Feel free to ask your questions. And make sure that you clear all your doubts before you go. And guess what? हम आपको 3 सवाल पूछेंगे. वो 3 सवाल का सबसे सही जवाब को हम लोरियल की तरफ से देंगे एक balayage application toolkit. Are you excited? Let's find out. But do remember to type in your salon name, branch, and your name along with your answers. So barring introduction, I can assure you that we will be speaking the language that you love to hear the most. That's right, Hindi. Yeah. So the most beautiful thing about today is that you're going to get a lot of information which you will be able to use in your salon. Okay, so what else you need more now? You're going to get information, you're going to get everything in Hindi, or majorly, I would say, we're going to try around with the English, which is something that we all can share with you today. And on a very serious note, pay careful attention to whatever is happening, because the questions are basically coming from the session itself. It's nothing out of the world. Yeah? So gifts and Hindi, and that's what on the table for you. All right. So on a serious note, to get more information on French balayage, please make sure you log on to our education app, Learn and Connect, and hit the menu, e-learning, and get all the updates. Okay, now here I have a confession to make.
I am a big fan of good technology to make my life better and efficient. I would say more efficient, to be very precise. Okay? So one such technology that I am addicted to and I am thankful to is the Style My Hair Pro app for all my consultations. Okay? Because it makes my life so much easier. Today, I don't have to pull out a magazine. I don't have to use a shade card. I don't even have to get my client to visualize how a color is going to look on her. Okay? The transformation is right in front of her, and it's absolutely free of cost. Make sure every single client of yours walk out through your salon door by wearing the right hair color. So starting today, use technology, use Style My Hair Pro, and make all your hair color transformation into reputation and revenue. Oh, speaking of pros, how can a French balayage education from L'Oreal can be complete without a French balayage ambassador? So, ladies and gentlemen, we are very, very fortunate today because we have an absolutely wonderful artist with us who is going to share his tips, tricks, and insights on French balayage. He is the founder and creative director of Vipul Chudasama Salons, Mumbai, winner of numerous prestigious hairdressing accolades, and one of the finest that the industry has produced, and one of the finest of the modern times. So it is my great pleasure and delight to announce to you that today we will have Vipul on live to share his insights on French balayage. So don't go anywhere, stay tuned and stay attentive. So let's start. Chalo, shuru karte hain. Balayage is a global color phenomenon. So आपको पता है दुनिया में 10 करोड़ से ज्यादा विमेन बालयाज हेयर कलर टेक्निक कैरी करते हैं. And because of the popularity, balayage has taken the social media by storm. Balayage अभी दुनिया का सबसे नंबर 1 हेयर सर्च टॉपिक में है. So everybody is paying attention to it, everybody is searching, everybody's interest is very high on balayage. Okay, balayage is not new for you. Okay, आप काफी साल से balayage के बारे में सुन रहे हैं. Yeah? So one way or the other, you all got trained about balayage by L'Oreal in your career over the past years. But हम बात कर रहे हैं French balayage के बारे में. तो ये फ्रेंच बालयाज क्या है? What makes French balayage unique and different? So let's deep dive and find out more about it. So French balayage है वो एक कलर फिलोसफी है, एक कलर विजन है. French balayage actually taking balayage back to its original Parisian roots. जिधर आप सबसे effortless, natural looking, healthy, luminous, glossy color create करेंगे जो सब लोग आज पूछ रहे हैं. But it's easier said than done. Okay, we are talking about effortless, natural looking, healthy, glossy. Very, very easy to hear, but it is very difficult to be done. Okay? इसके लिए आपको स्किल चाहिए, आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको टेक्निक चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए to literally make that seamless blend of light shades into the dark one. So French balayage का ब्यूटी है कि उसका फ्री हैंड एप्लीकेशन, उसमें आपको जितना प्रिसिशन मिलेगा उतना फ्रेंच बालयाज आपको beautiful and seamless milega. And second thing of the
the most important point in French balayage is the personalization involved in it. It is a highly personalized service. The technique can vary depending on the type of the hair that you deal with, the texture of the hair that you deal with, the natural color of the hair, the client's face shape and haircut. But at the end of the day, remember, there definitely is a French balayage for everyone. And the fundamental philosophy and the fundamental principle of French balayage is that it is a two-way color process, as simple as that. Yeah, there is absolutely no rocket science about it. Okay, what you really need is understanding the perfect way to lighten the hair with the most beautiful product, blending dark to light in the most seamless way, and also finishing it with the most natural looking cooler effect. So जिसको एक subtle transformation चाहिए, जिसको उसका natural color को enhance करना है, okay, we normally call them as the shy clients who really don't want to stand out and blend into the crowd. Okay, you can have very, very soft transformation for them. जो more confident है और more glam है, उसके लिए आप medium tone shades इस्तेमाल कर सकते हैं. और जो सबसे bold है, assertive है, outgoing है, you can play around with the lightest family of shades, but still blending very, very perfectly with the natural color that you have. But always remember one thing. The difference between lightening when it comes to French balayage is only 2 to 3 levels. So it is not highly contrasting between the dark and the light, and it is never red, it is never copper, it is never a very strong mahogany or a burgundy. It is perfectly blended, natural looking, cooler tones. मगर एक चीज बहुत जरूरी है बालियाश के लिए, वो है the health and the gloss of the hair. So बालियाश जब beautiful दिखता है तब जब बाल सबसे healthy, glossy, luminous and shiny हो. वो हो सकता है जब आपके पास the most technologically advanced new generation product है. So ladies and gentlemen, it is my pleasure to present to you the all new L'Oreal Professional Blonde Studio 8 with Bonder inside. A perfect blend of both worlds. A world of superior lightening with highly natural looking neutralized undercoats, and a world of safety and protection where the integrity and the cohesion of the hair is maintained at its maximum. So today you have two things put together into one box. One is the power of lightening, and the second one is the power of protection to the hair. So to know more about French balayage, the products, the placements, the technique, and the tips and tricks, it is my pleasure to call upon stage my dear colleague Anushka Pegado. Stay tuned, stay curious, don't go anywhere. Coming up, two beautiful techniques with French balayage, the expert talk with Mr. Vipul Chudasama, and to make you all famous, L'Oreal Professional French Balayage Superstar Contest. See you in a bit. Enjoy. Thank you. Your trainer. I'm very glad to be here. French balayage is one of my favorite color.
के साथ I am an artist and a trainer, and French balayage gives me the freedom to play around with varying color techniques, requirements, and the needs of our clients. हमने ये पहले भी सुना है, What makes French balayage so unique? इसके साथ हम लोग सीमलेस लाइटनिंग करते हैं, ऑल राइट, एंड साथों साथ ये एक न्यूट्रलाइज ग्लॉसी हेयर इफेक्ट हम लोग ये टेक्निक के साथ कर सकते हैं. लेट मी टेक यू बैक टू द सैलून एंड डिस्कस अ बिट फ्रॉम द सैलून फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू. जब क्लाइंट्स हमारे सैलून्स में आते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी डू? कंसल्टेशन, राइट? That's the time when we find out कि हमारे क्लाइंट का लाइक्स, डिसलाइक्स, उनके चॉइसेस, पर्सनैलिटी और उनका सूटेबिलिटी क्या होगा. दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे हम हमारे क्लाइंट्स के लिए एक लुक डिज़ाइन कर सकते हैं. Quite common to get a lot of first timers of hair coloring in the salon, and a matter of fact they are all on a lookout for a subtle natural looking transformation in their hair. They are the shy ones. So keyword यहाँ पे जो मैंने आपको सबको बताया है, जो हमको हमारे looks को डिज़ाइन करने में काफ़ी हेल्प करेगा, वो है shy, first time color, less commitment, natural transformation, enhancing the natural hair color. French balayage is just that. So let's begin. तो always remember, French balayage एक ऐसा टेक्निक है जहाँ पे हम लोग ये टेक्निक को अलग अलग हेयर टाइप्स, नीड्स और टेक्सचर के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं. The beauty of French balayage is all in the free-handedness. Now, I am going to start by showing you a quick demonstration of my first French balayage look. So, first thing यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये look के लिए I have already pre-mixed my product, that is the new Blonde Studio 8 with bonder inside along with 30 volume. To start this look, पहले I'll just place my foils. तो पहले यहाँ पे हम लोग एक डायगोनल बैक सेक्शन लेंगे. डायगोनल बैक सेक्शन जब भी हम लेते हैं, डायगोनल बैक सेक्शन लेते हैं, ये हमको एक काफ़ी मूवमेंट बालों में क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है. पॉइंट नंबर 1, डायगोनल बैक सेक्शन लेने के बाद आप अपने टेल कोम के साथ रूट्स में से यहाँ से आपको माइक्रोवीव सेक्शंस लेने हैं. पॉइंट 2 टू रिमेंबर, ये जो हमने माइक्रोवीव लिया है, ये हम लोग हमारे फिंगर्स के बीच में सेपरेट करके रखेंगे. नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर, जो आप प्रोडक्ट यहाँ पे लोगे, आपको बस थोड़ा सा प्रोडक्ट ब्रश के ऊपर लेना है. इट शुड बी एज गुड एज देर इज नो प्रोडक्ट ऑन टू दी ब्रश. देन फ्रॉम द मिड्स आप प्रोडक्ट को थोड़ा सा नीचे से लेके ऊपर की तरफ उसको हल्का सा विद जेंटल स्ट्रोक्स उसको आप अप्लाई करोगे. टेक सम मोर प्रोडक्ट. मेक श्योर अगेन आप ज़्यादा प्रोडक्ट ब्रश पे ऐड मत करना. ब्लेंडिंग इट फ्रॉम हियर, फ्रॉम द मिड पार्ट, बहुत छोटे स्ट्रोक्स लेके आप उसको ऊपर की तरफ दोनों साइड से ऐसे ब्लेंड करोगे. ये जो हमने ब्लेंडिंग यहाँ पे किया है, ये एक बहुत ही सॉफ्ट, सीमलेस, डिसअपियरिंग लाइटनेस टू डार्क इफेक्ट क्रिएट करने में हमको हेल्प करेगा. पॉइंट 3, अभी ये एप्लीकेशन करने के बाद हमारा जो माइक्रोवीव है वो हमारे बाकी सेक्शन के साथ हम लोग मर्ज करेंगे. वापस से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्ट लेते हुए ओनली ऑन द टिप ऑफ द ब्रश हम मिड्स के ऊपर हमारा प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे. अगेन रिमेंबर,
इस हमारा जो मूवमेंट रहेगा वो हमेशा डाउन टू टॉप की तरफ से होगा. सो अप्लाई द प्रोडक्ट एंड मूव टूवर्ड्स द टॉप. सेम चीज हम लोग दूसरे साइड पे भी रिपीट करेंगे टू गेट द परफेक्ट सीमलेस फ्रेंच बालियाज लुक एंड मूव इट टिल द टॉप. यहाँ पे आप अपना रिवर्स ब्रशिंग का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपको और भी सॉफ्ट ब्लेंडिंग रिजल्ट मिले. देन जैसे आपका मिड से लेके आपने ऊपर की तरफ प्रोडक्ट को अप्लाई किया, ऑल यू हैव टू डू, अभी हम हमारे मिड पार्ट्स में से ये प्रोडक्ट को नीचे की तरफ लॉन्ग स्ट्रोक्स में हम लोग अप्लाई करेंगे. मिनिमम प्रोडक्ट ऊपर की तरफ रहेगा एंड मैक्सिमम प्रोडक्ट सैचुरेशन विल बी फ्रॉम मिड पॉइंट टिल द एंड. कंटिन्यू विथ योर एप्लीकेशन. एंड अगर आपको पूरे हेयर कलर को और भी ज़्यादा एम्फसाइज करना है, आप अपने सेक्शन को 90 डिग्रीज ऐसे ऊपर की तरफ होल्ड करके ब्रश के ऊपर प्रोडक्ट लेते हुए यहाँ से भी आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अप्लाई कर सकते हो. अगेन जैसे आप देख रहे हो मेरा एप्लीकेशन ऊपर से नहीं है, बट आई एम अप्लाइंग फ्रॉम द मिड एंड देन ब्लेंडिंग इट टूवर्ड्स द बॉटम. धीरे धीरे हम प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे बिकॉज वी वांट अ ग्रेजुअल बिल्डअप ऑफ द प्रोडक्ट. एक साथ हमको बहुत हैवी प्रोडक्ट अप्लाई बालों के ऊपर नहीं करना है. सो क्रिएटिंग द राइट परफेक्ट सॉफ्ट सीमलेस ब्लेंडिंग इन द हेयर इज द की ओवर हेयर. जैसे हमारा प्रोडक्ट अप्लाई हमने किया, आप एक फॉइल के साथ आपके सेक्शन के नीचे उसको प्लेस करोगे एंड देन जस्ट सैचुरेट द प्रोडक्ट towards the ends. आफ्टर द प्रोडक्ट एप्लीकेशन आप अपने सेक्शन के ऊपर और एक फॉइल के साथ उसको आप कवर करोगे so that we have the right amount of lightening and lifting happening in the hair. Seal the foils and then we will move on to the next section. नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा रहेगा, वी विल बी टेकिंग अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन. हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेने से हमको हमारे हेयर के ऊपर जो हमारा कलर होगा उसमें और भी ज़्यादा विजिबिलिटी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. सो डायगोनल बैक सेक्शन विल हेल्प टू क्रिएट अ लॉट ऑफ सॉफ्टनेस एंड मूवमेंट इन द हेयर, and the horizontal section will help to create a lot more visibility in your hair color. Now ये horizontal section के लिए हमारा जो application रहेगा, हमको वापस से सेम चीज यहाँ पे रिपीट करना है. दैट इज रूट में से अगेन माइक्रोवीविंग एंड देन पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे हम हमारे फिंगर्स के साथ उसको सेपरेट करेंगे. माइक्रोवीविंग सेक्शन लेने से इट इज़ अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव ऑफ बैक कोमिंग. लाइक आई सेड अर्लियर, इट विल क्रिएट द परफेक्ट सीमलेस ब्लेंड of from the lightness to the darkness effect onto the hair. वापस, I hope you all are listening to the application. Very minimum product, जैसे कि ब्रश के ऊपर बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं है, हम मिड्स में से प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे and with short strokes we move it in the upward side. दूसरे साइड पे सेम चीज हमको रिपीट करना है. And this will help to create the most seamless, effortless color for your client. Point 2, हम लोग हमारे माइक्रोवीव को बाकी सेक्शन के साथ मर्ज करेंगे एंड मिड्स के ऊपर वापस से हमको यहाँ पे प्रोडक्ट को ब्लेंड करना है.
Keep blending till you don't get the perfect French balayage result. Because जब भी आप blend करोगे, that will help to create a beautiful result for your client. Again, जहाँ पे मैंने फर्स्ट सेक्शन पे, बिकॉज मुझे कलर और भी ज़्यादा एम्फसाइज करना है, तो मैंने सेक्शन को ऊपर 90 डिग्रीज को होल्ड करके नीचे की तरफ भी कलर को ब्लेंड किया. ऑल्टरनेटली अगर आपको और भी नेचुरल लुकिंग कलर चाहिए, आप यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे ही कलर को अप्लाई कर सकते हो. सो यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई माई प्रोडक्ट ऑन टू दी सरफेस and blend it in long strokes till the end. Use a foil ताकि आपका हेयर कलर बहुत अच्छे से लिफ्ट हो सके. एंड देन एंड्स की तरफ आप और भी प्रोडक्ट को अच्छे से सैचुरेट करोगे. यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को बिल्कुल भी हेयर के अंदर पुश नहीं कर रही हूँ. माई एंगल ऑफ द ब्रश इज फ्लैट, ताकि जो एप्लीकेशन होगा वो सिर्फ हमारे सरफेस लेयर पे ही होगा. And then enclose it with another foil on the top. Once again, in case anybody missed out my first application, वापस से हमको एक diagonal back section लेना है. What did I say for the diagonal back section? ये हमारे कलर में एक soft movement create करने में help करेगा. नेक्स्ट हमको वापस से रूट्स में से माइक्रो वीविंग्स लेना है. माइक्रो वीविंग्स यहाँ पे इट्स अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव ऑफ द बैक कोम. एंड देन नेक्स्ट हम लोग हमारे माइक्रो वीव्स को बाकी सेक्शन से विद द हेल्प ऑफ आवर फिंगर्स उसको सेपरेट करेंगे. अगेन टेक वेरी मिनिमम प्रोडक्ट ऑन टू द ब्रश एंड विद सॉफ्ट स्ट्रोक्स कीप ब्लेंडिंग इट गाइज. Less product over here is the key, which will really help you create a very effortless looking color जो बहुत ही natural आपके clients के ऊपर लगेगा and give you the perfect amount of blending. Section को बाकी section के साथ blend करना है and then mids में से थोड़ा सा और product लगा के हम उसको वापस से firm down till the top उसको अच्छे से blend करेंगे. Some more product. And then we go with long strokes from the midpoint till the ends. In case, like I said earlier, अगर आपको सेक्शन को और भी ज़्यादा कलर को एम्फसाइज करना है मिड्स में से, just take the section 90 degrees and then reverse application आप यहाँ पे भी कर सकते हो. Use your foil. And then with long strokes, blend the product from the midpoint till the ends.
and then my last section, जो लास्ट में आपको एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन मिलेगा, वहां पे भी हमको सेम चीज रिपीट करना है. Microwaving, separate your microwave from the rest of the hair with the help of your finger, and then almost no product on the brush, soft strokes from down till the top. Blend your section, जो आपका zigzag माइक्रोवेव है उसको ब्लेंड करो, एंड देन मिड्स में से और थोड़ा प्रोडक्ट लेके आप उसको अपने मिड सेक्शन पे अप्लाई करोगे. रिवर्स ब्रशिंग, इन केस आपको और भी ज़्यादा ब्लेंडिंग बालों के ऊपर क्रिएट करना है. And then move from the mid part with long strokes towards the end. Last section, and I'm almost done here. And then we will just secure it with another foil on the top. So guys, here I have finished my application. यही सेम टेक्निक को फॉलो करते हुए आई विल कंप्लीट, लाइक हम ये सेम टेक्निक बाकी हेयर के लिए भी हम लोग फॉलो कर सकते हैं. आई एम श्योर यू ऑल आर रियली इंटरेस्टेड टू नो कि ये जो मैंने अभी टेक्निक किया है वो एक लाइन के ऊपर कैसे दिखेगा. सो आई वुड नाउ लाइक टू कॉल ऑन स्टेज जानवी टू शो यू द फाइनल लुक ऑफ दिस टेक्निक. So guys, I have Janvi here with me today, and for Janvi who is young and shy, इनके लिए जो मैंने कलर किया है, I have used the all new Majorel Glow D17 shade for the global color application with 30 volume, and to create the most beautiful seamless French balayage look for Janvi, I have used the same technique जो मैंने आपको अभी demonstration में दिखाया है, all over the hair. And for the final most neutralized glossy effect, I have used the Dia Light 712 with 9 volume as my final toner. So Janvi, if you can just show your final look to everyone. So guys, I hope you really like the technique, but I'm not done here yet. Now I have the first question which will give you the chance to win the balayage application tool. So my first question, I hope you all are listening. My first question to you all is that what are the two keywords for a perfect French balayage?
Yes, आपके जो answers हैं, please type it in the comment box and shortly we will get back to you with the winners. Finally, here is the time to learn and see the French balayage look number 2. So for look number 2, I have Rashmi with us here today. So I would like to call Rashmi on stage. Hey everybody, I'm sure everyone is having a great time till now. Thank you so much Anushka for fantastic demonstration. And what we are going to learn right now is going to be absolutely fantastic and I'm sure you all are going to love it. Myself Rashmi talking to you from Mumbai headquarters. I take care of West One Education. If I tell you about myself, I enjoy doing hair and what I love absolutely is hair color. I'm sure it's the same with all of you, isn't it? Give me thumbs up in the chat box if it is same with all of you. All right. Now, when we talk about hair color, what is trending? Absolutely. It's French balayage. It's so much in trend. What is special about French balayage that it can be adapted to every possible client. जब सलॉन सिनेरियो में हम काम करते हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके के हेयर कट, अलग टाइप का लेंथ, डिफरेंट हेयर टेक्सचर, बहुत अलग वेरिएशंस वाले क्लाइंट आते हैं, सबका डिफरेंट हिस्ट्री भी होता है. उनके लिए, उन सब के लिए हम लोग फ्रेंच बालियाज डेफिनेटली कर सकते हैं. एंड फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन दैट व्हाट वी हैव सीन was almost on one length hair. Now, if your client is having lot of forward graduation and layered haircut, how do we go about it? Layered haircut को कैसे पेंट करना है उसके बारे में अभी हम लोग जानेंगे. If you look at my particular dummy head, I have divided a radial section into 3 parts: longest length, moderate layers in the center, and for money piece I have taken a triangular section, as you can observe on my dummy head. Now, obviously for seamless painting is the key word, as Anushka has already mentioned. For that seamless painting, what I'm going to use is Blonde Studio Multi-Technique 8 with bonder inside. This is absolutely fantastic for creating a seamless and beautiful painting. Let's get started with it. So for now, when you look at this longest length of mine, I can either take diagonal section or I can also take horizontal section. This depends on what do you want to achieve. आपके क्लाइंट का फेस शेप कैसा है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे आपको किस तरीके का सेक्शन लेना है. अगर आपको फेस को बहुत ज़्यादा ओपन अप करना है, आप सेक्शन ले सकते हो डायगोनल बैक. अगर आपको मॉडरेट कलरेशन दिखाना है, आप सेक्शन ले सकते हो हॉरिजॉन्टल. फॉर नाउ, फॉर माई पर्टिकुलर क्लाइंट, आई एम टेकिंग अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन. Make sure it's tangle free before you comb. Just give me a minute. Let me wear my gloves. All right. Okay. So, sectioning is the key. Sectioning करते करते हम लोग sectioning के पहले different hair variation के हिसाब से हम लोग ग्लोबल कलर का सिलेक्शन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So when your client is having virgin hair, you will first create a beautiful base, a beautiful fashion shade and nicer looking global color, and then you create your painting placements and then you tone it. This is going to be the sequence for today. So my dummy head is already global colored. I am taking a section, horizontal section. My product is already mixed over here just now. Always take very little product just on tip of your brush. When you start painting, make sure it's starting from mids. हम लोग mid से start करेंगे. और जो हम लोग का टेंशन है, टेंशन मतलब बाल को पकड़ने का तरीका,
ये 90 डिग्री पे होना चाहिए। अगर मैंने हल्का सा भी हाथ नीचे किया या बहुत ऊपर किया तो मेरा पेंटिंग प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगा। इसीलिए हमारा जो टेंशन है, मतलब बालों का पकड़ने का जो तरीका है, वो हमेशा टाइट होना चाहिए, ग्रिपिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम जो पेंटिंग करें वो बहुत इजीली सीमलेसली हो पाए, दिखने के लिए ब्यूटीफुल दिखे और एंड रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। सो वी स्टार्ट पेंटिंग इन मिड पार्ट ऑफ द हेयर। ब्रश में जब बिल्कुल ही कम प्रोडक्ट है, हम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। आई एम जस्ट डूइंग वन साइड पेंटिंग ओवर हियर, एब्सोल्युटली डिफ्यूजन ऑफ द प्रोडक्ट। उसको कनेक्शन के लिए, उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग बैक ब्रश करेंगे, ताकि एक डिमार्केशन ना दिखे, डिमार्केशन लाइन ना दिखे। अब इसको हम लोग करने वाले हैं completely enclosed. So we are going to enclose it completely with help of foils. Enclose सबको पता है, we are going to foil it basically. Let me just take out my foils. So here I'm taking my foil. Take a support of my foil and softer surfacing it only on the ends. अब इसको हम लोग completely enclosed करने वाले हैं. We are going to enclose it completely. हम लोग इसको open air बिल्कुल नहीं रखेंगे. इसको completely enclose करने के लिए एक ही logic है, because हमें ये piece सबसे bright दिखना चाहिए. The longest layer of entire layered haircut has to look brighter. That is my objective. इसीलिए हम लोग उसको completely enclosed रखेंगे. The second section what I'm going to take is डेंसिटी के हिसाब से वो सेक्शन कितने लेने हैं. नंबर ऑफ सेक्शन एंड द थिकनेस ऑफ सेक्शन कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द हेयर. सो अगर ये मेरा सेक्शन बहुत पतला है या कम बाल है आगे रेडियल सेक्शन में, आप 2 प्लेसमेंट्स कर सकते हो. अगर बहुत थिक है आप मैक्सिमम प्लेसमेंट्स भी ऐड कर सकते हो. सो इफ आई टेक दिस सेक्शन, आई एम अगेन टेकिंग diagonal forward over here. Earlier I took horizontal. Now I'm taking diagonal forward section. In this particular section, I will take slice out of it. और इसको जैसे मैंने पहले वाले सेक्शन को enclose किया है, तो मैं इसको इसके ऊपर ओवरलैप कर सकती हूँ, ताकि ये प्रोडक्ट डेफिनेटली नहीं लगेगा एक दूसरे को. I make sure I comb it nicely. comb करने के बाद I can secure rest of the hair at back. ये पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हम लोग डेमी एनक्लोज्ड करेंगे. व्हाट डू आई मीन बाय डेमी एनक्लोज्ड? डेमी एनक्लोज्ड मतलब बेसिकली हम लोग इसको हाफ फॉइल के अंदर डालेंगे और हाफ ओपन एयर रखेंगे. ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि जो फॉइल के अंदर नहीं है वो सटल दिखे और जो फॉइल के अंदर है वो ज्यादा ब्राइट हो. अगेन for the painting for this particular section, I again start saturating my product on the mids. जब हम लोग पेंटिंग करते हैं हमें एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए. इफ यू सी व्हाट इज हैपनिंग, माय लेयर्स आर ड्रॉपिंग. दैट्स एग्जैक्टली व्हाई मैंने सारे बालों को एक साथ सेक्शन में नहीं लिया, मैंने उसको कैटेगराइज किया है. तो आई कैन अगेन टेक बैक ऑल द लेयर्स, कीप माई टेंशन ऑन 90 डिग्री, टेक लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट ऑन द brush, start painting it, slowly and gradually move towards roots in absolutely diffused action. Here I am creating V for adding different dimension, because पहले वाले section पे हमने सिर्फ one side painting किया था. Here I am creating softer V. I paint it all through my mids. और जब मुझे एंड्स पे उसको प्लेस करना है, आई एम गोइंग टू प्लेस इट ओनली हाफ वे थ्रू. मैं इसको हाफ वे थ्रू प्लेस करूंगी. इसका मतलब है मैं आधे बालों को ही फॉइल में लगाऊंगी. सो मिड्स टू एंड्स फॉइल में होंगे एंड रेस्ट एवरीथिंग विल बी ओपन एयर. सो जब इसका लाइटनिंग होगा, ये वाला जो पार्ट है
it will be softer and this part will have brightness. So we will be able to see two different tones, two different undercoats into it. And definitely जब हम लोग toning करेंगे वो all the more अलग दिखेगा. It will have a beautiful transition of darker going into lighter. अब हम लोग बात करते हैं हमारे मनी पीस की. मनी पीस के लिए हम लोग क्लाइंट के सामने प्रेफरेबली खड़े रहेंगे ताकि हमारी ग्रिप अच्छी मिले, हमारा पेंटिंग जो है वो बहुत अच्छा हो. सो आई हैव मूव्ड माय डमी हेड टुवर्ड्स मी. ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज योर क्लाइंट्स फेस शेप. क्लाइंट का फेस शेप अगर बहुत लंबा है, आप मनी पीस के अंदर बहुत ज़्यादा लाइटनिंग ऐड मत कीजिए ताकि वो हाइड ऐड करेगा. आप रूट्स को शैडो रखोगे, डार्क रखोगे. अगर फेस छोटा है, शार्प फीचर्स है, शार्प जॉ लाइन है, शॉर्ट फोरहेड है, यू कैन गो ऑन एडिंग ब्यूटिफुल मनी पीसेस एंड वो डेफिनेटली एनहांस करेगा फेस शेप को. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई विल स्टार्ट मिडवे थ्रू. I will divide my triangular section in half. Secure rest of the hair at back side. यहाँ पे हम लोग दो मनी पीसेस ऐड करने वाले हैं. The first money piece which I'm going to take is going to be a softer zigzag way. Instead of taking direct slice, हमने softer zigzag slice लिया है ताकि उसमें beautiful variation दिखे. Zigzag slice को लेके what we are going to do is again, अब हम लोग यहाँ पे saturation के बारे में एक चीज ध्यान में रखेंगे. Saturation is going to be minimalistic, मतलब एकदम ही कम saturation होगा. For example, this is my section. I will take absolutely no product or minimum product into my brush, or else you can take a new brush, a fresh brush for money piece, where you can take absolutely less product on the brush, make it slightly flat, start painting the surface. अब यहाँ पे saturation बिल्कुल ही कम होगा. We need to add lightening, but lightening is going to be superficial with the help of surface painting, less saturation. बाकी वाले section में हमने mids to ends maximum saturation किया था, but for money piece it's going to be a softer saturation. Once I'm done and coming till the ends तक हमें एकदम soft saturation करना है, because मेरा objective ही ये है कि मुझे एकदम minimalistic lift चाहिए. I don't want to see maximum lightening over here, especially on the money piece. Now I'm not going to enclose it with the help of foil. What am I going to do? I will keep it completely open air. और ओपन एयर रखने के लिए what I have done is I have taken the help of cotton. कॉटन के हेल्प के मदद से मैंने उसको ओवरलैप किया है. अगर मैं डायरेक्टली रखूंगी तो शायद वो क्राउन पे कर्वेचर होता है, वो स्कैल्प पे लगेगा और दूसरे बालों तक पेनिट्रेट होके वहां पे लाइटनिंग हो सकता है. दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव डन इज आई हैव केप्ट isolated it with the help of cotton. The second money piece that you can take is definitely can be on the front. This you have different variation. क्लाइंट को अगर डायरेक्टली फेस को आपको एनहांस करना है, आपको लाइटर सॉफ्टर पीसेस ऐड करने हैं, आप इसको कर सकते हो. किसी का फेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, अराउंड द फेस आपको बहुत ज़्यादा लाइटनेस नहीं ऐड करनी है, आप उसको डार्क रख सकते हो. Whether to paint it or no, that's your choice, because French balayage is all about customization. Okay. Now I prefer painting it again superficially. So I will take my lightener on the brush. Whenever you're taking lightener, make sure you take minimalistic product on the brush, only a superficial painting, softer towards roots, absolutely minimum product. Here you will see and you will experience, जब आप fringe area जो करोगे, आप हमेशा experience करोगे कि कुछ कुछ बाल drop हो रहे हैं. कोई बात नहीं, उनको वापस हम लोग इकट्ठा ले लेंगे, बट उनको ड्रॉप नहीं होने देना है. अदरवाइज आधे बालों पे कलर होगा, आधे बालों पे नहीं होगा. आई एम टेलिंग यू व्हाट हैपेंस इन दी सैलून व्हेन वी डू एप्लीकेशन. आई एम श्योर यू ऑल कैन रिलेट टू इट. या
So we hold the section properly. We do surface application till the ends. Ends तक भी ज़्यादा saturation नहीं करना है, सिर्फ surface painting करना है. And what we are going to do is, again I will take help of my cotton. कॉटन पहले से हम लोग कट करके रखेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो. जब हम लोग काम कर रहे हैं हम लोग इजीली काम कर सकते हैं और हम लोग उसको इजीली प्लेस करेंगे. सो दिस इज हाउ वी हैव सीन 3 different variations over here. First section completely enclosed, second demi enclosed, half open, half painted. So we see variation of dark to light. This is going to be subtle among all. One more trick, what we have done over here on this particular section, अगर आपको बहुत ज़्यादा brightness नहीं ऐड करना है या extremely soft दिखाना है, आप उसके लिए नया lightener mix कर सकते हो और आप उसको 20 volume के साथ mix कर सकते हो. Rest of the hair you can do it with 30 volume, Blonde Studio Multi Technique 8 with bonder inside and 30 volume for rest of the section, and top is going to be with 20 volume. This is a trick to keep top section subtle. All right, how are you guys liking it? I'm sure you're having a lot of fun. Are you all excited to see this on real model? Absolutely. We are going to show you a model with exactly almost similar haircut, lot of layers and glam personality. For this, I will just keep my dummy head slightly away. For the glam transformation, I would like to invite Harshada on the stage, please. Look at her. Isn't she glam? So if you look at different dimensions of her colors, what do you think? So Harshada came up with absolutely confident and glam personality. So she came up with a natural base 4, and what we have done is we have added different dimensions of French balayage. It's exactly the same technique what we have just demonstrated. If you see, the longest part of the layer is brightest, or in the mid part, which is moderately layered, this is on a subtle family, and the money piece, exactly a top part of the hair is not, you don't even feel the most lighter pieces on the top because this was painted in an extremely subtle manner, and money piece is done again with the 20 volume. For her global color, what we have done is, her global color is with Majorelle 6.13 and toning with Dialite 9.12 after placing with Blonde Studio Multi Technique 8. For styling, we have used pli, of course, for heat protection, and ring light for adding a lot of gloss and shine into the hair. If I show you the side profile for the better view, you see different dimensions all through the hair. If I just turn her slightly just to show you the entire look from backside, just see the free flowingness, the seamless blending and beautiful complementing tone all across. Harshada, would you like to show your entire look to everybody? All right. So after seeing 2 modern transformation, one for the model which was shy, the second was absolutely glam and confident. Are you all excited to see the third transformation of the day? Yeah? All right. So I would like to invite my third model over here. Her name is Angelina. Angelina, can we have you on the stage, please?
All right. So this is Angelina. She came up with extremely bold and modern personality. She is extremely experimental and her color choices are absolutely bold. When she came in, she told us we want to look absolutely bold and I want to have the most visible transformation, most visible colors. So hence her natural base was 4 and we designed her look with global color Innova 7.18, painting with Blonde Studio Multi-Technique 8 with Ponder inside, and toning is done with Dialight 9.13. And if you look at her placement we have done in a exactly way what you have seen on the first model. So here or in alternate sections we have done the surface as well as the backside painting to add maximum visibility, definitely on the lighter tone, and hence we see more of lighter pieces flowing into, and hence it is complementing with the global shade. For styling we have used volume lift to accentuate her natural volume and to add lot of lift around the roots, and finishing is done with Elnet. So this is her final result. I would like to show you the side profile of Angelina. If I just lift the side profile and take you all through the money pieces and different lightning all across the sections. I would like to also show you the back side so that you can have a look at the entire look. आप लोग देख सकते हो entire look कैसे दिखता है with and complement एक दूसरे को shades कैसे करते हैं. हमारा global color, accurate selection of the shade and beautiful painting is the key. Always remember. Angelina, would you like to show your look, your bold look to everybody? I'm sure you all are having a lot of fun, gained a lot of insight. I want to give you 5 keywords to achieve the best possible French balayage look. Remember, the first keyword is going to be SMH Pro consultation. We are going to do consultation with SMH Pro. Step number 2 is accuracy in your shade selection. The most appropriate shade selection is another key. Third is seamless blending. When you blend it, it has to be seamless, beautiful, no demarcation at all. And step number 4, what comes after blending is absolutely toning game and glossing. We will do glossing with DR Richesse and DR Light and effortless styling to show the finished look. These are my 5 keywords for you. As discussed, I would like to tell you that, remember, we announced something in the beginning of the session. Of course, there are going to be 3 winners. And first question, Anushka has already asked. That was, what are the 2 key words to create most effortless and fantastic balayage? That was the first question. I repeated for all of you, just in case if somebody missed. I don't want you to miss a chance of winning a beautiful balayage kit. My question number 2 for all of you is, what are the shades that we have used for our shy transformation? Janvi, Anushka's model, what we demonstrated, what were the shades we used in terms of global as well as for toning? Okay, I'm sure I gave you 2-second ka breather just to think on the question. My question number 3 is, what are the 5 key words? What are the 5 steps that we need to remember to create most beautiful French balayage transformation? All right, with all these 3 questions, now I'm super excited to see your own masterpiece. Please take out your balayage kits and start painting. Now that we have almost reached on to the second half of the session, we are going to have a most
special session right now. Of course, it's going to be with our own pro artist. For this, I would like to invite Mr. Pradeep Dhananjayan on the stage. Till then, happy painting, guys. See you. Thank you, Rashmi. Thank you so much. I hope all of you are really enjoying the French balayage transformation, shy, glam, and bold. Yeah. So now the time has come us to hear from the French balayage ambassador from L'Oreal Professionnel. He needs absolutely no introduction. We heard about him in the morning, the winner of so many hairdressing accolades and one of the finest that the hairdressing industry of India has ever produced in modern times. So it is none other than Mr. Vipul Chudasama himself. So let's have a very interesting. Thank you, Vipul. Thank you for that beautiful heart of yours. I say Vipul is a man born to do hair. Okay, Vipul is exceptional when it comes to understanding the artistic touch of hair, the beauty of hair. He just flows with it. He just moves with it. So I had the greatest honor of working and interacting with Vipul for so many years. And today, I think it is a great delight and pleasure to have Vipul live on screen to have a chat with. So Vipul, hello and welcome to the balayage bootcamp, French balayage bootcamp from L'Oreal. Thank you so much, Arun. Absolutely. Thanks a lot. I'm so excited for this session, particularly the French balayage bootcamp. I'm so happy that there are, I think, more than 600 people watching us live right now and learning very interesting French balayage from our own team, Anushka, Rashmi, and of course you. Thank you, Vipul. Thank you so much. Super happy to have you. We would like you to give your tips, tricks, and insights about French balayage. Shall we begin? Yeah, sure. I'm ready. Absolutely. Okay. So, Vipul, according to you, how do you define French balayage? So, should I call you Arun or Pradeep? Anything. So I'm a man of two names. I know that. You can. So I'm sure most of the hairdressers, jitne bhi hairdressers in our country, we as a L'Oreal team, we have been training people and they have been doing balayage. Balayage is basically about sweeping, doing nice, beautiful painting. But when I talk about French balayage, which is absolutely revolutionary, the current trend, for hair coloring. The moment I think about French, it's about very natural looking, very soft, absolutely blended and seamless, the color placements which you do for your every client. So when I think about French balayage, of course, it is all about seamless and in a very simple way, you can do it just 2 steps. One, you have to do pre-lightening, do beautiful, blended multi-technique, aid with bonder inside. And the step 2, the most important part for balayage, the final outcome, which is neutralizing, the lightening, what you have done. And for that, you use the most amazing product, which I love the most, is diorite, because we know how wonderfully it works, and you neutralize, the lightning which you have done, according to your client's desire. So this is what how I imagine the French balayage, the most subtle, soft, seamless, blended, natural-looking hair coloring for the year. Thank you, Vipul. I think that is that pretty much sums up, the whole picture about French balayage. But we still have some more questions for you. Sure. So
If you have to talk about, French balayage, okay, and that comes out of your heart, what is it that you really love? What that one thing that you really, really love about French balayage out of all the feelings that you have towards it? So, Pradeep, whenever I work on the floor or, past couple of years, any client, and I'm sure jitne bhi hairdressers dekh rahe hain, when you have client coming to your salon, one thing they ask कि मुझे ऐसा कलर करके दो आप जो बहुत नेचुरल लुकिंग दिखे, ना ज्यादा दिखे ना कम दिखे, it has to look very natural looking. The French balayage, what you need to do is basically ऐसा दिखना चाहिए कि वो क्लाइंट सैलून में जाके उन्होंने कलर नहीं कराया है, बट द क्लाइंट इज बॉर्न विद दैट कलर. मीन्स इतना ब्यूटीफुली ब्लेंडेड आपने किया है कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ इन्होंने वहां पे सेक्शन लेके कुछ कलर किया है या ऐसा कुछ. इट शुड लुक वेरी वेरी नेचुरल एंड एफर्टलेस. So that's what I feel. And again, it's just very very simple way you can do it. Just 2 steps: lightening, and you neutralize with the light, your favorite shades, according to your client loves. So, Vipul, thank you. Do you think neutralization and the choice of the right toner shades play a big part in creating this natural looking effect into the hair? I think the step 2, of course, step 1 is very important because the way you're going to do lightning. But the step 2, what you're asking right now, Pradeep, is very, very crucial and very important. Because when I talk about French balayage, जैसे मैंने आपको बताया कि it has to look very natural looking. That means it shouldn't be contrast. जब contrast नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे client का बाल level 4 का है, तो मुझे lightning 5 या 6 level तक नहीं करना है. तो अगर 4 लेवल का आप ग्लोबल करते हो और अगर लाइटनिंग 6 या 7 लेवल का करोगे तो बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखेगा, जिसको मैं फ्रेंच बालियाज नहीं बोलूंगा, क्योंकि फ्रेंच बालियाज इज ऑल अबाउट ब्लेंडेड एंड सीमलेस. इसका मतलब आपको 4 लेवल का अगर कोई क्लाइंट का ग्लोबल आपने किया है या शेड डिसाइड किया है, तो 1 या 2 लेवल ही आपको ऊपर जाना है, मतलब 6 या 7 लेवल तक का आपको करना है, जो आपको न्यूट्रलाइज करना है. अब जनरली आप देखोगे हमेशा आपको 3 तरीके के क्लाइंट मिलते हैं. एक होता है शाई क्लाइंट, जो बहुत ही ज्यादा ब्राइट बोल्ड वैसा नहीं पसंद है. दूसरा होता है ग्लैम, उनको ना ज्यादा कम पसंद है ना ज्यादा ब्राइट पसंद है. और तीसरा होता है जो बोल्ड, जिनको हमेशा कुछ ब्राइट और विजिबल दिखे वैसा होना चाहिए. तो इस तरीके से हम हमेशा डिसाइड करेंगे कि किस तरीके का क्लाइंट है, शाई है, ग्लैम है या वेरी बोल्ड क्लाइंट है. उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे. तो जैसे मैंने आपको बताया कि 4 लेवल पे है तो हम 5 या 6 लेवल तक का न्यूट्रलाइजेशन करेंगे. अगर हम कुछ 6 लेवल तक का ग्लोबल कर रहे हैं तो 7 या 8 लेवल का हम लोग न्यूट्रलाइजेशन करेंगे. Okay. और फिर थोड़ा और अगर किसी को बहुत ज्यादा ब्राइट चाहिए तो उस हिसाब से आप 2 या 3 लेवल का डिफरेंस रख के फिर बाद में आप न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं. हमेशा मैं जब भी समझ लो कि किसी का 4 लेवल का या 5 लेवल का हेयर है, ग्लोबल हमने डिसाइड किया है, सो जनरली आई ऑलवेज प्ले विद डायलाइट 7.8 or maybe 712, depends, you can decide according to that. और अगर मुझे थोड़ा ग्लैम चाहिए या तो फिर बोल्ड की तरफ चाहिए तो मैं ग्लोबल हमेशा कुछ 6 या 7 के आसपास मैं करता हूँ. और तभी जब मैं टोनिंग करता हूँ, न्यूट्रलाइज करता हूँ, तब मे बी 912 or maybe 913. So anything around 9 level, you can select your dialight shades and you can neutralize it. Remember guys, it has to be blended. It has to be very soft, natural looking, seamless. And of course, when I'm going to use dialight, मेरे हर client जितने भी salon visit करते हैं, they expect 2 things. One, always they want shiny hair, means gloss. और dialight से बेहतर मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, because you will get beautiful shine, gloss after doing neutralizing or toning according to your client's desired look. And the second, the most important part is that you choose the right shade which will complement your client's personality
जैसे मैंने बताया कि शाई क्लाइंट है, ग्लैम है या तो फिर बोल्ड है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा रिफ्लेक्ट, कौन सा शेड आप यूज करोगे जिससे आपका पूरा लुक न्यूट्रलाइज होके बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल दिखे. Thank you, Vipul. Thank you for all the insights. Pleasure. I know that, thank you. So I know that in one of the market researches, we have understood that only 18 clients out of the 100 walking into the salon, जो color करते हैं, 100 clients में 18 clients color करते हैं. Okay. So still there is a lot of people to reach out to in terms of color services. So what do you think, or who do you think are the right clients for French balayage service? I think answer to this question is every client who's walking into my salon, every female client who's walking into my salon is my French balayage client. You know, जैसे प्रदीप आपने बताया कि 100 में से सिर्फ 17 या 18 लोग ही कलर कराते हैं या तो फिर बालियाज कराते हैं. तो इमेजिन कि आज भी हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही कंपटीशन और सैचुरेटेड मार्केट हो गया है, पर मैं ये सोचता हूँ, एंड ऑफ कोर्स प्रदीप सर ने जैसे बताया कि सिर्फ 17 लोग करते हैं. सो अभी भी गैप बहुत ज्यादा है. ऑलमोस्ट 80 क्लाइंट्स हमारे सैलून में 100 में से ऐसे हैं जो कलर नहीं करवाते हैं या तो सिर्फ ग्लोबल कलर कराते हैं. सो दैट मीन्स आई हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी to build my color clientele in my salon. And when today I have an amazing trend which is a French balayage, जो हर इंडियन वुमन, हर इंडियन क्लाइंट जो चाहता है कि मुझे नेचुरल लुकिंग कुछ चाहिए, मुझे बहुत ही ज्यादा ब्लेंडेड और सॉफ्ट लुकिंग चाहिए, मुझे कुछ ज्यादा फ्लैशी नहीं चाहिए. So I think this is a perfect, the trend, what we can do it for every single client who's walking into our salon. Yeah, I think I totally agree with what you are saying, Vipul. It is a great opportunity for offering those who are looking for the natural transformation or very subtle transformation, those who are kind of afraid of getting into the world of color just because they can't really visualize themselves how they will look like. But Vipul, one yes, because I feel that when I think again, when I think about French balayage in terms of tones, in terms of shades, it's all about browns. It's all about nice, beautiful mochas, caramel. You can play with all these shades or the tones, and I think it's a perfect, the suitable color palette for every Indian woman who walk into the salon. Absolutely. So do you think consultation plays a big role in conversion? What is your opinion on that? Oh, this is something very crucial, for every hairdresser. हर hairdresser के लिए consultation वो ऐसी एक चीज है. आज पिछले मैं almost 18-19 years से मैं hairdressing कर रहा हूँ. Still today, Pradeep, I spend almost up to 30 minutes sometimes. I give that much time to my color client, especially to understand my client's likes, dislikes, उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो उनका स्किन टोन कैसा है, उनके किस तरीके के बाल है. ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है क्लाइंट से, और वो समझने के बाद then फिर we will decide that what color suits the most for my client. Also, now we have a very interesting tool, our very interesting app, which is SMH Pro. That is also very interesting because when we use in the salon, it is very interesting where client can see the difference without doing color, that what color suits me. So when you check that, literally client can feel that, maybe red doesn't suit me, but when they will see SMH Pro में कि हाँ red तो पूरा बहुत अच्छा दिख रहा है, maybe they will try and explore the different shades. And likewise, there are multiple ways, you can ask different questions, understand,
and then do this, beautiful French balayage for the client. So consultation is the key to success for coloring, for sure. Absolutely. Thank you, Vipul. I think I completely second what you have just said. Uh, uh, the journey of a client starts with consultation. And it is the very first impression that we create. And using technology in this consultation is all the more crucial because they are made to make our life better and easier. So, Absolutely. absolutely. So thank you, Vipul. It's been really, really great to hear these points, but I have a few more tips that I would like to hear from you, or tricks that I would like to hear from you for Sure. my fellow or our fellow, hairstylists who are watching across the region. So normally, people have a lot of apprehensions about the length of their hair when it comes to balayage. Some naturally, maybe they just think that maybe balayage does not fit me because I have too many layers, or I have maybe a too long hair, or I have too short hair. So what's your take on that, Vipul? So, जैसे हमने बात किया कि French balayage is something personalized color service for every client. जब मैं बोलूँगा कि personalized means हर एक client के requirement के हिसाब से, चाहे वो short hair हो, चाहे वो medium length हो, चाहे वो long length हो, अब हर कोई client के लिए, in fact very short hair के लिए भी आप कर सकते हो French balayage. तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लंबे बालों के लिए कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ लेयर्ड हेयर के लिए या वन लेंथ हेयर के लिए कर पाएंगे. आप हर एक क्लाइंट के लिए फ्रेंच balayage कर सकते हो. Again, I will repeat, it's about blended, seamless, natural looking hair. So you can do it for anyone and everyone. If you see today, I have posted the picture, the look which I have done for my client on Instagram. It is for the bob. And it's absolutely seamless, beautiful bob haircut, and on that we have done French balayage. So you can go for it. कोई भी client आए, कोई भी hair length हो, कैसा भी haircut हो, उसको समझो, client की requirement समझो, and just go for it and just explore and do it. All right, absolutely. So thank you, Vipul. I would like to chew your brain on one thing now. Sure. Give me some technical tips. What is your secret? Well, my secret about what? About about application. How do you get the perfect seamless blending in terms of French balayage? Because everybody has got a style. We demonstrated a few styles today. That's not the know-all and end-all of it. People, improvise themselves, and there is a lot of attention going on French balayage and how to take it back to its original Parisian root, how to get that, disappearing lines of dark and light, and get that, most effortless color into the hair. So what is it that you look forward to when you put your brush on the hair? What is it that you think? Okay. So, Pradeep, generally, whenever I do French balayage, what I simplify is that, because I like simple things, because simple things are more beautiful. Any sections you work around. जैसे आज हमने देखा अनुष्का मैम और रश्मि मैम ने, they work with diagonal sections, horizontal sections. So we are hairdressers. We have all creative freedom to play around. आपको जैसे भी लगे उस हिसाब से आप sections दे सकते हो. But the most important part is step 1. Step 1 is about lightening the hair. Step 1 में कुछ problem होगा तो step 2 पे आप कितना भी focus करोगे, it will not look beautiful. So the step 1 is the most important part, where how I simplify. जो भी section लेंगे प्रदीप, we will divide into 3 zones. जो roots के पास है उसको zone A बोलेंगे, mid length जो है उसको zone B बोलेंगे, और ends जो है उसको zone C बोलेंगे. Now ये तीनों जोन के हिसाब से हमें काम करना है, जिसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जोन ए में जो रूट्स के पास का एरिया है
वहां पे ज्यादा प्रोडक्ट हम ना लगाए। अगेन मैं बताना चाहूंगा सब लोगों को कि जैसे रश्मि मैम और अनुष्का मैम ने एप्लीकेशन किया था, उन्होंने बार बार वो बोल रहे थे कि कम से कम प्रोडक्ट लेके मैं जोन ए पे एप्लीकेशन करूंगी। सो जब भी इतना ज्यादा सैचुरेशन जोन ए के पास नहीं होगा तो वो बहुत ब्यूटीफुल और ब्लेंडेड दिखेगा। फिर बाद में उससे थोड़ा प्रोडक्ट जोन बी पे एंड देन मोर प्रोडक्ट ऑन जोन सी पे। बट जब भी मैं शुरुआत करूंगा एप्लीकेशन करने की, हमेशा मैं शुरू करूंगा जोन बी से। तो हेयर को हम होल्ड करेंगे। टेंशन जो रश्मि मैम बोल रहे थे, अनुष्का मैम बोल रहे थे कि टेंशन मींस बालों का कंट्रोल, जो ग्रिप है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। टेक द प्रोडक्ट, अप्लाई ऑन जोन बी। फिर जब प्रोडक्ट बहुत ही कम होगा ब्रश में, या तो फिर प्रोडक्ट को आप कम करके फिर बाद में आप बी से ए की तरफ जाओगे, उसको सैचुरेट करोगे, ब्लेंड करोगे, डिपेंड्स आपने किस तरीके से प्लान किया है। एंड देन यू विल टेक द प्रोडक्ट एंड यू विल लोड ऑन जोन सी फ्रॉम बी टू सी। और ये अगर आप इसको बहुत अच्छे से आप निभाओगे या उसको प्रैक्टिस कर करके उसको आप करोगे, आई एम श्योर आपका स्टेप 1 बहुत ब्यूटीफुली सैचुरेट होगा। जो रूट्स के पास, मतलब जोन ए के पास बहुत कम लाइटनिंग होगा, फिर थोड़ा ज्यादा, और जोन सी की तरफ उससे भी ज्यादा। एंड देन ऑफ कोर्स स्टेप 2 वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि जिस हिसाब से जो लेवल तक मैंने लाइटनिंग किया है, वो अंडरकोट पे मैं जब पहुंचूंगा तो उसके हिसाब से मुझे कौन सा लेवल का टोनिंग करना है अकॉर्डिंग टू माय क्लाइंट्स पर्सनालिटी और उनकी लाइक्स या डिसलाइक्स के हिसाब से, जो वापस मैं बताऊंगा। क्लाइंट कोई शाई है, ग्लैम है या बोल्ड है, उस हिसाब से आप लेवल ऑफ शेड्स का डिसाइड कर सकते हो डिजायर लुक के हिसाब से। एंड देन यू डू न्यूट्रलाइजेशन। सो दोनों स्टेप 1 एंड स्टेप 2 बहुत जरूरी है। बहुत सिंपल भी है क्योंकि हम कितने सालों से कलर करते आए। इट्स जस्ट दैट you just follow this and you will have beautiful, interesting French balayage. Yeah, I think that was very interesting to hear. So ऐसा नहीं कि there is a magic pill and you have it and from tomorrow onwards you are a French balayage. I'm still learning, Pradeep. I know, I'm so amazed to and heartened to know that you have paid so much of attention to what both Anushka and Rashmi have been doing, and that makes you different and unique, I would say. You are still hungry to learn more. You educate so many hairdressers around this country, but you yourself considered to be a student, so which I think is really a heartening thing for me. Thank you, sir. Okay, so Vipul, thank you once again, and I have a very interesting question for you now. So we saw balayage where you very specifically explained that if you get that perfect blend, and that happens when you only control your movement by starting from zone B to zone A. But we saw over a period of time there are very strikingly different or contrasting or drastic difference between balayage happening. Those were not actually French balayage, so we really want to take people back to its Parisian roots and create this. So we saw varying tones of reds and let's say coppers and deep mahoganies or very rich mahoganies going on. So balayage at the end of the day is all about creating that very natural looking cool neutralized effect. Okay, so do you think balayage can be done for people with all sort of skin tone? Yes, you can do for all sort of skin tones, and as I mentioned that the French balayage is perfect for Indian women and majority in our country. Of course, some clients are quite fair, some clients are they have beautiful dusky skin. So for Indian skin tone, I think it's perfect because you can play around with mocha, you can play around with caramel, you can play around with browns. So different families you can play around, and you can do French balayage for Indian women. So I think it's the most beautiful and very soft, natural looking
the coloration we can do for Indian women. We have maximum clients who's visiting us, getting pictures of European clients or European makeovers. Right. But when I think about French balayage, this is what we can create, and we want clients to get the reference from our fraternity. कि हम जिस तरीके का काम करेंगे, people will see that people get the reference and they show this is what I want, this is what I want, like French balayage, which is more blended and seamless looking hair. Right. Thank you, Vipul. Thank you very much. All right. So, yeah, you are a big influencer in terms of hairdressing as a profession. You count more than 50,000 followers to your account and growing by the day. And people across the country watch at least one post from your day. That includes me also. So being such a big, always a pleasure. So being such a great presence on social media and influencing hairdressers around the country and around many parts of the world, according to you, when people put their pictures on social media, okay, we know for a fact that the facade of the salon and the image of the salon has moved from the physical facade to the digital facade. Okay, so when hairstylists post their pictures, if you can give a few technical tips or few tips from your end to them to get more attention and more traction in terms of viewers. Sure. So first of all, Pradeep, thank you very much calling me hair influencer. But you are a KOL, key opinion leader. But I feel that still long way to go. अभी ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में कि दिल्ली बहुत दूर है, अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं है. So still long way to go. It's just the beginning, or you can say it's just the शुरुआत. But I really appreciate for your compliments, man. Thank you so much. Of course, I completely agree. कुछ सालों पहले salon की facade, of course, आज भी उतनी ही important है. But everybody is moving to digital platforms. For any profession you talk about, and particularly we are in fashion industry. We do beautiful hair, and for that, to show your talent, if you just do great work within your salon, it is not just enough in today's time. So understanding digital platform, and according to that, you need to create beautiful content to show it to the world. And for that, I think Instagram or Facebook, the digital platform, उससे ज़्यादा कुछ और कोई बड़ी बात नहीं है. So I always believe that you're doing great work, but अगर लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे, लोग नहीं देखेंगे, so I think it's just good for my client, but also I need to make sure that I inspire other clients जो देख के मेरे salon में आएंगे और मेरे से काम करवाएंगे. And the second, the most important, that I inspire my fellow hairdressers, pros, जो पूरे country में जो देखेंगे कि हाँ इस तरीके का काम इन्होंने किया है, maybe I can do something around that and I can create something like that. So it is an inspiration for my consumers, जिन्होंने शायद मेरे salon में आके कोई service नहीं करा है, वो भी आ सकते हैं, and of course hairdressers. Now ये सारी चीजें करने के लिए what all things I need, क्या मुझे करना पड़ेगा इसके लिए? So बहुत सारे hairdressers बोलते हैं कि no, मैं picture नहीं ले सकता हूँ बराबर, या lot of people they try, but then somewhere it's slightly clutter around the image and all of that. तो मैं बहुत simple से basic tips मैं देना चाहूँगा या तो फिर tricks देना चाहूँगा जो मैं हमेशा follow करता हूँ. सबसे पहले I think सब लोगों को एक salon में ऐसा कोई space आपको decide करना है, preferably white background. अगर पॉसिबल नहीं है तो ऐसा कोई स्पेस जहां पे बहुत ही ज्यादा कलर या तो फिर बहुत ज्यादा क्लटर पीछे ना हो.
व्हाइट बैकग्राउंड होगा तो सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड के सामने अगर क्लाइंट खड़ा रह के आप पिक्चर लेते हो तो जो भी कलर आपने किया है वो पूरा उभर के दिखेगा। जो दूसरे कोई क्लाइंट को आप दिखाओगे या तो फिर वो क्लाइंट का पिक्चर जब आप अपलोड करते हो तो आपका जो काम किया हुआ है वो बहुत सुंदर दिखेगा, बहुत डिफाइन होके दिखेगा। हेयर कट हो, कलर हो, जो भी आप करते हो। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग the biggest trend of the year, which is French balayage, हम उसकी बात कर रहे हैं। Also it is very natural and soft looking. इसका मतलब अगर बहुत ज्यादा चीजें अराउंड है तो कलर जो हमारा काम है उसके ऊपर उतना फोकस नहीं होगा। तो बैकग्राउंड इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लाइट। कभी भी कोई भी कलर देखते हैं उसके लिए लाइट, मतलब सोर्स ऑफ लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोगों के सैलून जैसे होते हैं जहां पे डे लाइट आपके सैलून में आती है, तो उससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। अगर डे लाइट का सोर्स आपके सैलून में, तो रिंग लाइट, ऑफ कोर्स सब लोगों को पता है रिंग लाइट। यू कैन इन्वेस्ट ऑन रिंग लाइट बिकॉज रिंग लाइट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। प्रदीप, मेरे सैलून में 2 रिंग लाइट है, एक नहीं 2, क्योंकि अगर 2 क्लाइंट्स है, दोनों का मुझे पिक्चर लेना है तो एक को रुकना पड़ेगा। सो आई ऑलवेज कीप इट 2 रिंग लाइट्स इन अकेडमी, 2 रिंग लाइट्स इन सैलून। सो रिंग लाइट इज समथिंग। दो मेरा सैलून आपने देखा होगा, आई एम श्योर पिक्चर्स देखे होंगे, रील्स देखे होंगे कि इट्स वाइट, इट्स फुल वाइट, बट स्टिल आई केप्ट द रिंग लाइट। आई हैव नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट आल्सो, बट स्टिल फॉर द सेफ्टी रीजन, क्योंकि कलर करते करते अगर शाम को लेट हो गया, डे लाइट है नहीं, तो फिर क्या करेंगे। सो रिंग लाइट इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन टू इन्वेस्ट ऑन, जो आपको हमेशा ब्यूटीफुल कलर को एनहांस करेगा, ओवरऑल पिक्चर भी बहुत अच्छा दिखेगा। ये दूसरा टिप है जो आपको हमेशा ये 2 चीज पे हमेशा ध्यान देना। तीसरा, जब भी आप पिक्चर लोगे, क्लाइंट के आसपास या बाजू में कहीं पे ट्रॉली ना हो। जब फोटो ले रहे हो तो बैकग्राउंड में आसपास में क्या दिख रहा है, कहीं पे ड्रायर पड़ा है, कहीं पे मे बी कलर बॉल पड़ा है, या तो फिर पीछे और कुछ है। सो ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखनी है कि आसपास में कुछ नहीं होना चाहिए। जब पिक्चर लेंगे तो कोई भी वो पिक्चर को देखेगा तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये पिक्चर खींचा गया है सिर्फ बालों के लिए। मतलब जो आपका काम है, जो आपका हीरो है, कि देखते ही क्लाइंट को ऐसा लगना चाहिए कि ओ वाओ, दिस क्लाइंट इज ब्यूटीफुल है। तो उस तरीके से हमें पिक्चर लेना है। फुल पिक्चर लेने की जरूरत नहीं है, हमें टाइट शॉट लेना है, क्योंकि हमें हमारा काम दिखाना है। ऑफ कोर्स क्लाइंट्स पूछते हैं, हम ले सकते हैं, बट द मेन फोकस हैज टू बी ऑन दी हेड। And after that, so if you don't have clutter, like you are taking a pictures, it's clutter free, and then you focus on the hair, हमेशा आपका काम बहुत सुंदर दिखेगा, and then you can upload it on Instagram. तीसरी बात, चौथी बात, you need to understand the algorithm, means Instagram पे कौन से टूल्स और कौन सी चीजें हम यूज करेंगे जिससे हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, हमारा रीच बढ़ेगा, लाइक्स बढ़ेगी, कमेंट होगा, ये सारी चीजें। तो आई एम श्योर सब लोगों ने देखा होगा, एक तो हम नॉर्मल पोस्ट करते हैं, दूसरा हम लोग अभी रील करना शुरू करते हैं जो अब ट्रेंड में है, आईजीटीवी होता है, फिर चौथा होता है कराउजल। कराउजल मीन्स आपने स्वाइप किया होगा जिसमें 3, 4, 5 आप फोटोज डाल सकते हो। तो जितने उनके टूल्स है वो सारे टूल्स आप फीड के लिए यूज करोगे हमेशा। आज मैं भी पोस्ट किया जस्ट सिंगल पिक्चर, कल हमने रील डाला, परसों कराउजल किया, मे बी वंस इन अ वीक और वंस इन अ 15 days हम लोग आईजीटीवी करेंगे। एंड ऑफ कोर्स हर एक क्लाइंट का बिफोर एंड आफ्टर जो आपको स्टोरीज करना है, एवरेज 5 to 6 or 7 स्टोरीज अ डे। दिन में उतनी स्टोरीज तो आपको करनी ही है, और हर क्लाइंट का या प्रोसेस दिखाओ या तो फिर सिर्फ बिफोर एंड आफ्टर दिखाओ, जिससे एंगेजमेंट बढ़ेगा तो रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ेगा तो फिर आपके लाइक्स, फॉलोवर्स, कमेंट्स, ये सारी चीजें भी बढ़ेगी। स्लोली जाएंगे बट काम ऐसा करेंगे, लेस बट द बेस्ट। कम करेंगे बट अच्छा करें। हर एक फोटो डालने की जरूरत नहीं है जो आपको लगता है कि दिस इज कम आउट वेरी नाइस, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, वही आपको फोटो अपलोड करनी है, रील बनानी है, वीडियो करना है, स्टोरीज करना है। ऐसे वैसे रेंडमली कोई भी फोटोज लेके आपको नहीं डालनी है, क्योंकि आपका फीड देख के भी कस्टमर को पता चलता है कि आप किस तरीके के आर्टिस्ट हो, आप किस तरीके का काम करते हो, आप किस तरीके के कौन से लेवल का सैलून हो।
उस हिसाब से वो फीड देख के भी लोग आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गूगल पे लोग जाते हैं रिव्यूज देख के, फिर बाद में क्लाइंट कॉल करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। बट उसके साथ साथ अभी ये भी इम्पोर्टेंट हो गया है कि ये सैलून में मैं जाऊंगा, ये हेयर ड्रेसर के पास जाऊंगा, तो इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल में देखूंगा, ये सैलून की प्रोफाइल कैसी है, किस तरीके का काम करते हैं, उस हिसाब से क्लाइंट डिसाइड करके नहीं मुझे यहाँ पे जाके करना है। जैसे आपने अरुण बताया कि सॉरी अभी अरुण और प्रदीप दोनों हो रहा है सो जैसे आपने बताया कि फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वी हैव 68% क्लाइंट्स कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। प्रोफाइल पे जाते हैं, काम देखते हैं, सिर्फ कलर कराने के लिए बॉम्बे आते हैं, हेयर कट कराने के लिए बॉम्बे आते हैं, एंड देन दे गो बैक। सो ये आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट टूल हो गया डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो हम सबको बहुत ही फोकस करना चाहिए। प्लस आज से हमें फ्रेंच बालियाज किस तरीके से करना है वो हमने सीखा है, तो हम सबको मिलके इतने सारे फ्रेंच बालियाज करने चाहिए कि इंस्टाग्राम सिर्फ सब लोग यही देखेंगे, देयर इज ओनली फ्रेंच बालियाज। एवरी क्लाइंट शुड कॉल यू कि मुझे फ्रेंच बालियाज करना है, मुझे कलर करना है वो नहीं, मुझे फ्रेंच बालियाज करना है, ये हमें करना है। Absolutely, absolutely. I am so I feel so much better by now with all the the words that I heard from you. They are so meaningful and so to date, because I know you have built your name, fame, and career brick by brick with following all the fundamentals and the things which are really there to take the industry forward. And hearing out from you on something that we can do to revolutionize the hair color industry altogether by all of us coming together and taking this mission forward with French balayage, and taking the internet and the Instagram by storm, and at the end of the day offering our end consumers the right color that she can wear, and make herself feel confident and happy about the way she is. I think that is a very, very important aspect. All of Absolutely, absolutely. Yeah. So सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शायद लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा पोस्ट या रील्स करता हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ 15 या 20% ही कर रहा हूँ। There is long way to go. अभी ऐसी बहुत सारे टूल्स है जो इंस्टाग्राम के मैं यूज नहीं कर पाता हूँ। I'm sure सारे टूल्स यूज करूंगा, so it will be even better for all of us. Absolutely, absolutely. So thank you, Vipul. Thank you. It's been a true delight to have you, and thank you for your time. There are hundreds and thousands of hairdressers watching now, and there are going to be many 10,000s who are going to be watching later. These are pearls of wisdom, I would say, whatever that you shared with us today, and it means us a lot. It's mean to us a lot. I wish you a great, great evening ahead, and let's connect with you again in the upcoming versions of balayage and hear out from you more. Thank you so much for sharing your secrets. Thank you so much, Arun. Thank you It's so been a much true pleasure. thank you for inviting me for this amazing French balayage boot camp. This is again one of the very important example कि हम एक साल पहले तक क्लासरूम ट्रेनिंग्स करते थे, और आज हम वर्चुअल मास्टर क्लास और बूट कैंप्स कर रहे हैं. सो दिस इज अनदर एग्जांपल. सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी गाइस. आई लव यू ऑल. प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो. एंड आई लव यू सो मच. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू अरुण. थैंक यू सो मच. Thank you, Vipul, once again. Take care. Bye bye. So that was Vipul Chudasama, founder and creative director of Vipul Chudasama Salon and Academy. I said this before, and I said this again. One of the leading members in hairdressing industry that India has ever produced. So with all the insight that you received from Vipul Chudasama, and also what L'Oreal would like to help you
build your career and build your name and fame ahead, I would like to announce to you a very, very interesting contest through which you can become the superstars of French balayage. The French balayage superstar contest from L'Oreal Professionnel. Create your pictures, your beautiful balayage creations, bring in the attitude, beautiful hair, healthy, luminous, glossy hair, beautiful background, clean and neat background, I would say, when I mean by beautiful background, and the clothing which takes the French effortless and elegant aspect, and also make sure that the hair does the talk. Your French balayage does the talk. Create your most beautiful French balayage, shoot it, upload it, and tag it. And hashtag, tag it at L'Oreal Pro_Education_India, hashtag French Balayage India, and hashtag L'Oreal Prof India. For more information on French Balayage Superstar, do connect with your area L'Oreal educator and sales executive. So, few things to remember. Before we do that, let's see who are the winners of the day. Okay, so here I have the list of winners. For question 1, the winner is Aarti Walia, the first salon, Pune. So many congratulations, Aarti. We shall definitely send the beautiful gift to your salon ASAP. Question number 2, the winner is Cynthia Fernandez, Salon Mystic Bloom, Goa. So bravo and congratulations, Cynthia. And question number 3, the winner is Meenakshi Maske, Salon Beauty Touch, Aurangabad. So amazing job, guys. Thank you for your participation, and it really, really made our day all the more special. And before we move on, let's understand the few things that we really, really have to keep in our mind. First thing, start doing French balayage, the most beautiful hair color of the season from today. Remember the keywords: effortless, natural looking, luminous, healthy, glossy hair color. Do remember to log on to Learn and Connect app and Style My Hair Pro. Okay, become the superstar by participating in the French balayage contest. Create, shoot, upload, and tag us. So I mentioned this before, that when I showed up for the first French balayage, for the first boot camp of ours, pardon me, that I was excited. And today, at the end of the second boot camp, which is on the latest trend in fashion color, that is French balayage, I am super, super duper excited knowing the fact that we could manage to give you so much of information that can help you become superstars at your own right. So thank you, Rashmi, thank you, Anushka, and thank you the entire commercial and technical team of L'Oreal Professionnel West 1 region for bringing us closer today. And thank you, Vipul, once again for spending time with us and giving your tips, tricks, and secrets. So stay safe, stay connected, stay strong. Till we meet again, happy French balayaging, good luck, and goodbye.
you.